called as a fertile. C, ਬੀ ਬ੍ਰੈਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਕਰ ਇਜ਼ ਸਟੀਰਾਈਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਰਕਰ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਏ ਪਾਵਰ ਟੂ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ, ਵਰਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਨਾ ਐਗਸ ਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦ ਡਰੋਨ। ਬੇਟੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it is only produced by ovum. There is a no fertilization between ovum and sperm. The queen lay the ovum, ova remain unfertilized and develop into the drone. ਆਪਾਂ ਜੇ क्रोमोसोम status ova ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ status ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ? Haploid. What is haploid? One set of chromosome. What is diploid? Two sets of a chromosome. बेटे one set of chromosome वास्ते एक term recall कर लो, it is genome. One genome n, two genomes 2n, three genomes 3n and so on. ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਡਰੋਨ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਲ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਟਸ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਟਾਈਲ, ਇਟ ਕੈਨ ਗਿਵ ਬਰਥ ਟੂ ਦ ਯੰਗ ਵਨਸ। Drone will produce a sperm. If a sperm is fertilized with the ovum, it will resulted into a queen if feed by royal jelly. If feed by bee bread, it will converted into the worker caste. So drone is reproducing parthenogenetically. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨਸਿਸ ਦਾ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੀਐਮਟੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਵੇਅਰ ਵੀ ਪਲੇਸ ਦਾ ਪਾਰਥੀਨੋਜੈਨਸਿਸ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? I repeat bete, where we place the parthenogenesis mode of reproduction, in asexual, in vegetative, in sexual reproduction. Try करके देखो बेटे। It will be placed in sexual mode of reproduction. Why? जब आप क्वेश्चन रेज करिए कि why the parthenogenesis plays in a sexual mode of reproduction? Simple जो आंसर है बेटे, this reproduction involve a gamete. sperm involve हो सकता है, ovum involve हो सकता है, लेकिन दोनों कदे भी involve नहीं होंगे. No two gametes. Just because of a gamete, we place it under the heading of sexual रिप्रोडक्शन। ओके, एक और चीज़ बेटे, देयर इज ए नो फर्टिलाइजेशन। गैमीट बन चुके हैं लेकिन फर्टिलाइज नहीं करेगा। ਇਹਦਾ मतलब इस वक्त बेटे अर्थ ਦੇ ਉੱਪਰ जिन्नी भी लाइफ हैगी है, लाइफ हैज़ ए पावर टू रिप्रोड्यूस, दैट इज रिप्रोडक्शन इज ए मेजर कॉज ऑफ अ लाइफ। थर्ड टॉपिक देखो बेटे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रक्रिया हैगी है विच इज़ मस्ट फॉर द लाइफ। आप बेटे एक सिंपल जी रिएक्शन स्टार्ट करने हैं, सॉल्ट NaCl। If you put a salt in a water, it will converted into a solution। ग्लास ਦੇ ਵਿੱਚ बेटे इस रिएक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? केमिकल रिएक्शन। लेकिन इफ वी कंज्यूम द सॉल्ट, उस वक्त साड़ी बॉडी दे विच बेटे जिहड़ी भी रिएक्शन चलेगी, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज बायोकेमिकल, नॉट केमिकल। केमिकल रिएक्शन दे बेटे जो बेसिक डिफरेंस आंदा है, केमिकल रिएक्शन ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय कैटलिस्ट, हमेशा याद रखो। और जोड़ा कैटलिस्ट होएगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ वर्ड अप्लाई करने नॉन लिविंग।
So chemical reaction is again non-living. When we go for a biochemical, फिर तो बेटे वही गल आ गई बायो, मतलब life. Life involving chemical reactions are called as a biochemical reaction. This biochemical reaction is performed by, फिर तो बेटे वही वर्ड आ गया, कैटलिस्ट तो पहले आप की फिट करांगे बायो कैटलिस्ट, या फिर बायो कैटलिस्ट ਦਾ अपने कोल एक होर बहुत वधिया नाम हैगा एंजाइम्स. मतलब all the biochemical reaction which takes place inside your body are always with the help of a enzymes. That biochemical reactions has a one more name is metabolism. जिन्नी लाइफ हैगी है बेटे सारी दी सारी बाय मेटाबॉलिज्म सर्वाइव करती हैगी है. दिस मेटाबॉलिज्म ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट anabolism and second catabolism. Ana would stand for to make, making, किसी चीज़ में बनाना इज ए एनाबॉलिज्म. कैटा कटना बेटे, टू ब्रेक डाउन. एक सिंपल एग्जांपल देखो, फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल ऑफ ए एनाबॉलिज्म. रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म. आप रिएक्शन परफॉर्म करके देखने हैं. इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर will make one molecule of glucose plus water. There is a making of glucose. So we place photosynthesis is an example of anabolism. Okay? Catabolism बेटे, if a person consume the glucose, अपन reaction इत्थे start कर देने हैं. If a person consume the glucose, it will break down into the CO2, into the water. This process to break ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, कैटाबॉलिज्म. एग्जाम्पल रेस्पिरेशन. बेटे रेस्पिरेशन वास्ते एक सिंपल जिहा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ ए फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. अगर तुसी जिहड़ा फूड कंज्यूम किया है, दैट फूड इज ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ऑक्सीडेशन. और उस रेस्पिरेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, एरोबिक रेस्पिरेशन. लेकिन कुछ ऐसी सेल्स हैगियां साडी बॉडी दे विच विच आल्सो ब्रेक डाउन द फूड, लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं करनगियां उस फूड ਨੂੰ. देयर इज अ नो ऑक्सीडेशन. दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. कैन यू रिकॉल बेटे कोई ऐसा एग्जाम्पल तुहानूं याद आ रहा होए कि तुहाडी बॉडी दे विच ऐसी किहड़ी सैल हैगी है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. बाकी मेजोरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, एरोबिक रेस्पिरेशन. आंसर रेड ब्लड कार्पसल्स. ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. इट विल गो फॉर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. बट एक सिंपल जी गल याद रखियो, तुसी सारे अवेयर हो गए रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया. इट्स कॉमन नेम इज पावर हाउस.
ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਦਿਸ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ absent in RBC। ਇੱਕ ਰੂਲ ਬਣਾ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਜਿਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਐਵਰੀ ਸੈੱਲ ਪਰਫॉर्म द रेस्पिरेशन। ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं हैगा ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫॉर्म ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ, ਐਵਰੀ ਸੈੱਲ ਪਰਫॉर्म द रेस्पिरेशन। if that cell has mitochondria, respiration ਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? aerobic। if a cell won't have mitochondria, respiration ਦਾ ਮੋਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? anaerobic। simple answer। in your body there is a continuously both type of metabolism taking place। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। now I am giving you a one single example। first, you might be aware about the AMP। ਬੇਟੇ AMP ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, it will converted into the ATP। AMP ਦਾ ATP ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। concept clear? AMP to ATP is called as anabolism। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ what is ATP, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਉਂਡਸ ਹੈਗੇ। ਐਵਰੀ ਸੈੱਲ ਹੈਜ਼ ATP ਐਜ਼ ਏ ਐਨਰਜੀ ਕਰੰਸੀ। every cell has a power to produce ATP। now see the second concept bete, if we remove the first phosphate group, now it will be ADP, one more phosphate group, it will be resulted into the AMP। this process is called as catabolism। concept clear? ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਬਾय ਦ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫੂਡ। ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੂਡ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਯੂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਮੈਟਰ। ऐसा फूड ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਦੇਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ। ऐसा food which won't contain the energy, won't contain the matter is called as a junk food, like pizza, burger। so one should go for a healthy food to get energy। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ATP will stored। for these ATP we have to dependent upon the nutritious food। ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਮੈਟਰ। ਮੈਟਰ ਦਾ ਬੇਟੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਟਰ ਦੇ ਪਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ plenty of energy plus plenty of matter ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। this will helps in the body building। in this process how the metabolism will maintain your body। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ, rate of anabolism equal to the rate of catabolism, that person will maintain a healthy growth, perfectly normal growth। now see, if in a person anabolism overpower the catabolism, ਜਾਂ ਉਹ ਐਸਾ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ,
and such a person will be resulted into the overgrowth. Overgrowth means obesity bete, जिन्ना fried food हैगे. See the third case, if a catabolism overpower the anabolism, मतलब उस इंसान की बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ एनर्जी ਲੈਵਲ बहुत ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ लेकिन वर्किंग ਲੈਵਲ बहुत ज़्यादा हैगा. दैट पर्सन विल कॉल्ड एज अंडर द हैडिंग ऑफ डी ग्रोथ, मतलब जिन्नी ਉਹਦੀ ग्रोथ होनी चाहिए है उस तो बहुत घੱਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ग्रोथ हैगी. यू कैन सी रिक्शा पुलर, वो हमेशा डी ग्रोथ स्टेटस ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ. जिन्ना काम रिक्शे वाला कर रहा हैगा उसकी यानी कि ਜਿਹੜੀ पूर्ति हैगी वो नहीं कर पा रहा हैगा. ਜਿਹੜੀ डाइट ਉਹਦੀ हैगी है वो उन्नी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा ताकि वो अपनी लाइफ में सस्टेन कर सके. सो मेटाबॉलिज्म इज ए मोस्ट असेंशियल कंसेप्ट फॉर द लाइफ. नाउ सी द फोर्थ स्टेप इज सेल. सेल बेटे, सेल इज द basic unit of life. This earth has only and only made up of cell. Regarding the cell, we use animals which are animals or plant or life having the one cell. They are unicellular. जिवें सारे बैक्टीरिया, almost सारे प्रोटिस्टा one cell. Yeast one cell, Chlamydomonas one cell, Chlorella one cell, Spirulina one cell. Such a life is called as unicellular. Now, if a life has many cells, it is multicellular. सब तो सौखा एग्जाम्पल बेटे, man. We have 100 into 10 to power 12 number of cells, जिन्हों ਆਪਾਂ 100 trillions भी कह सकते हैं. So we place in a group of multicellular. इसका मतलब बेटे, cell is a basic unit of life. We can't predict a life without a cell. Simple example quote करो, वायरस ਆਪਾਂ कित्थे place करांगे बेटे वायरस ਨੂੰ? Non-living. Why the non-living? Because its body not made up of cell. No doubt it has a genetical material. DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, लेकिन दोनों इकट्ठे कदे भी नहीं होंगे. This virus is placed in a group non-life. No life at all. ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ. What is connecting link? It connects non-living with a life. जब तक वायरस किसी भी सेल तो बाहर हैगा, किसी भी लाइफ तो बाहर हैगा, it is non-living. But once it enter in your life, it will becomes living. किमें बेटे, वायरस जिहड़ा हैगा वो तुहाडी अपनी मशीनरी ਨੂੰ यूज़ करेगा. जिवें रिसेंटली तुहानूं flu is a viral disease and that virus is called as a इन्फ्लुएंजा. ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, lot of influenza viruses are moving there. ਪਰ ਚਾਂਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ one should get infected. ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਟੇ, once it will attack, the person is liable to the disease flu. ਉਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ H1N1. ਕੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਬੇਟੇ? ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ. It is given in your disease chapter, H1N1. That is a swine flu. Now, regarding the cell, bete, all life on this earth plays into two broad category in the cell. One, prokaryote. Second, eukaryote. What is prokaryote, bete? ऐसी लाइफ जिहदे विच there is a absence of nucleus. Nucleus ना दी चीज़ नहीं हैगी है. No nucleus.
plus they don't have any cell organelle like plastid, like mitochondria, like centriole. हाँ, लेकिन एक सेल ऑर्गेनली दे आर हैविंग की ना बेटे ਉਹਦਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ। किस टाइप ਦਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮ है बेटे ਉਹ 70S type। one more thing, in prokaryote DNA present, लेकिन this DNA is not spotted by histone। बेटे हिस्टोन के बारे एक चीज़ नोट कर लो, काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्टोन्स दे आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। आपां लिखिए या ना लिखिए बेसिक हिस्टोन, इनफैक्ट बेसिक हिस्टोन वर्ड लिखना बिल्कुल गलत हैगा। हिस्टोन इटसेल्फ स्टैंड एज ए बेसिक बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ ए बेसिक अमाइनो एसिड। रिमेंबर, if a DNA don't contain the histone, such a DNA is called as naked DNA। आप एक वर्ड और पढ़ा होएगा, in prokaryotes one term is used, that term is called as a nucleoid। remember बेटे, न्यूक्लियोइड का जो बेसिक मतलब हैगा look like a nucleus, write down look like a nucleus but not a nucleus। ਆਪਾਂ न्यूक्लियस ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ which contain a membrane, nucleoplasm and DNA। now come to the eukaryotes। in eukaryotes बिल्कुल बेटे ਇਹਦੇ अपोजिट कर ਲਈਏ। in eukaryotes there is a presence of centrally placed nucleus। there must be a nucleus। all the cell organelles are present बिना किसी एक्सेप्शन दे। रिगार्डिंग द राइबोसोम आंदा होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ। in eukaryote in cytoplasm the ribosome is ATS type, लेकिन in mitochondria in chloroplast it is 70S। लेकिन अगर अपनी बॉडी की गल आती है, अपनी बॉडी का मतलब है मैमल की गल करिए आपां, मैमल्स माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ 55S राइबोसोम। नोट कर लो बेटे इनू, 55S राइबोसोम प्रेजेंट इन योर सेल, इन योर बॉडी। ऑल द मैमल्स हैविंग द 55S इन स्पाइट ऑफ ए 70S। DNA बेटे ऑलवेज प्रेजेंट द DNA, लेकिन it is always spotted by histone। remember, DNA spotted by histone plus non-histone also। this non-histone nature किवें होएगी बेटे non-histone दी, it is acidic। it is acidic in nature। ਆਪਾਂ लिखिए या ना लिखिए non-histone itself stand for acidic। बेटे इस तो अगे हुण आपां नैक्सट टाइम कल गल करांगे। जो अपना नैक्सट लैक्चर होएगा योर 5th टॉपिक सारा इत्थे तक रिवाइज करके आयो, पढ़ के आयो। जिथे तुहानूं कोई डिफिकल्टी हैगी है, आस्क द डिफिकल्टी ऑन द गिवन सेल नंबर। थैंक यू बेटे।